Hello and welcome to the podcast, everyone. Today we have Siddharth Srivastava with us. He's Forbes 30 under 30. He's co-founder of Able Jobs, venture partner at First Cheque. He's a product coach and he has done entrepreneurial studies from prestigious MIT, and he's also a graduate of Y Combinator. Uh, Welcome to the podcast, Siddharth. It is so nice to have you. Thank you so much, Sushank. It's actually a pleasure. I think we have met a couple of times before, Yes. and I'm looking forward for a delightful conversation. Yes. So first of all, Siddharth, let me tell you, it is really great to meet people like you who have done some wonderful things in their life, and recently you stormed LinkedIn with your photo with Sam Altman, and it was so good to see that you have been with the world's best. You have been at Y Combinator and interacted with some of the best minds in the world, and again, you are doing a great job here. So, Thank Siddharth, you. apart from what you have learned there, let us just also try to bring some knowledge on startups, because you have been to Y Combinator clearly and you understand startups, this world, more than anybody else. Mhm. So, please tell us. So, let us start with fundable startups, because Correct. that is your expertise. Okay. Right. Right. एंड दिस इज व्हाट रियली जनता ऑफ इंडिया वांट्स टू नो कि भाई Mhm. फंडिंग वाला स्टार्टअप कैसे करें. बट होता क्या है, बहुत बार बिजनेस आइडियाज लोगों के होते हैं, वो इन्वेस्टेबल नहीं होते हैं. उन लोगों Mhm. को पता भी नहीं होता कि ये इन्वेस्टेबल नहीं है. सबको लगता है हाँ मेरे को पास तो बिजनेस आइडिया है और विल टेक द फंडिंग. ओके, Right. लेट अस स्टार्ट Right. फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टेबल स्टार्टअप, ताकि ये Right. मिथ क्लियर हो जाए. तो प्लीज टेल बिल्कुल. व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स गेट द फंडिंग. Correct. Cool. I think it's a very valid question, and while ऐसा लगेगा कि बहुत बेसिक है, बट इंटरेस्टिंगली इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में. क्योंकि a lot of people who are in the industry, who are starting up and sit and hang around with tech entrepreneurs, might also not have extreme clear understanding of ये investable startup होते क्या हैं, right? So I'll try and paint a dichotomy. I'll try to help you understand and help the audience understand rather कि आप इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स कहते हैं किनको है. तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो कब उसे स्टार्टअप कहते हैं, कब वो एक नॉर्मल बिजनेस है, राइट? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो शायद लोग पूछते नहीं है, बट आज के दिन में अगर मैं एक सैलून खोल लेता हूँ, तो क्या वो एक स्टार्टअप है? राइट भाई, है तो वो भी एक बिजनेस. तो ये इसको समझने के लिए बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है कि एक ट्रेडिशनल सेंस में एक बिजनेस स्टार्टअप तब माना जाता है जब वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो. वो जरूरी नहीं है कि पहले दिन से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो. आप सबके अपने अपनी जर्नी होती है, लोग स्टार्टअप्स ऊपर नीचे जाते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू बिकम अ स्टार्टअप that it should basically grow at a breakneck speed after a certain point of time, right? तो अब इसी इसी में छिपा हुआ है कि कौन सा बिजनेस या कौन सा स्टार्टअप इन्वेस्टेबल स्टार्टअप है एंड कौन सा नहीं है. ठीक है. तो आई थिंक हमें यह समझना होगा कि when does anything grow really fast, right? अगर मैं एक सैलून खोलता हूँ, लेट से, बहुत अच्छा चलता है, मेरे हाइपर लोकल एरिया से लोग आते हैं, उनको मैं सर्व करता हूँ, रिटेंशन बहुत अच्छा है, बट इट्स स्टिल नॉट ग्रोइंग रियली फास्ट, राइट? तो हर महीने लेट से कुछ 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 आपकी लीनियर ग्रोथ आ रही है, और फिर उसके बाद जाके एक समय पर कैप कर जाएगी, क्योंकि एक एरिया में उतने ही लोग हो सकते हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन आपने सोचा, आपको एक दिन आइडिया आया कि यार इसकी मैं फ्रेंचाइजी बना सकता हूँ. जिस तरीके से मैं कस्टमर्स को सर्व करता हूँ उसकी एक प्लेबुक है, और वो प्लेबुक शायद मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से या फिर अदरवाइज बहुत तेजी से लोगों को दे सकता हूँ, एंड उस तरीके से वी कैन ग्रो बिग. नाउ दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टेबल स्टार्टअप. क्योंकि आपने एक बिजनेस आइडिया को पकड़ा और फिर अब आपके पास एक नया इंसाइट आया जिसकी वजह से आप उसको बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे, राइट? तो असली जो सीक्रेट है वो ग्रोथ में छुपा हुआ है. इसीलिए कई बार आपको ये भी दिखता है. तो आई डिस्क्राइब
that once you start growing, that is where you start becoming, so as to say, hot या investable. क्योंकि अगर आप तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही होगी. आज आप एज वन सेलॉन, लेट से 1 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा आपका, लेट से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. अब वो आप जल्दी आप ग्रो करने गए, आपने प्लेबुक निकाल ली, अब पता चला 100 सैलून आप 6 महीने में ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं. तो आइडियली फिर 2 साल में योर रेवेन्यू, यू कैन इमेजिन, विल बी स्काई रॉकेटिंग. नाउ एनी इन्वेस्टर, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस बिकम्स रियली एक्साइटिंग. कि अगर मैं आज इनके शेयर्स खरीद लेता हूं तो उनकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने वाली, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. तो आज अगर कंपनी की वैल्यू एक्स रुपीज है, बिकॉज दे आर अर्निंग लेट्स से 2 करोड़ रुपीज एन ईयर, अगर वो 2 साल बाद 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहे होंगे तो ऑब्वियसली एक्स का वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू. तो वो सिंपल सा फंडा है कि आपका बिजनेस कितने तेजी से ग्रो कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक इन्वेस्टेबल स्टार्टअप है क्या नहीं. नाउ राइट, कुछ एग्जांपल्स और दीजिए आप इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स के, ताकि क्लैरिटी और आ जाए. श्योर, बिल्कुल. तो इन्वेस्टेबल स्टार्टअप में जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ग्रोथ कितनी तेजी से आ रही है. इसके अलावा दूसरी चीज होती है कि कितना बड़ा मार्केट साइज है. अगर हो सकता है कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो बट आपका लेट से मार्केट साइज ही बहुत छोटा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट से उन गार्डनर्स के लिए कोई खाद बनाई है जो रोज लगाते हैं, अपने उगाते हैं. छोटा सा मार्केट है, राइट. कितने गार्डनर्स हैं जो अपने में रोज लगाएंगे अपने गार्डन में, उनमें से कितने लोग एक्साइटेड होंगे नए प्रोडक्ट को चूज करने में, बहुत छोटा मार्केट होंगे. तो किसी कारण से अगर आप तेजी से ग्रो कर भी गए तो योर टैम और टोटल एड्रेसेबल मार्केट विल रिमेन वेरी स्मॉल. तो इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनके मार्केट साइज आपको आइडिया सुनते ही समझ आया, इसका तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है आगे, राइट. तो ये आपके एग्जाम्पल होंगे जो आपके बेसिक नेसेसिटीज को शायद केटर करते हो, कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस. कंज्यूमर ओरिएंटेड, राइट. तो एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, ट्रेवल से रिलेटेड हो गया. ये सारी चीजें एक इंसान रिपीटेडली करता रहता है अपनी जिंदगी में. वो पढ़ाई करता रहता है, वो एंटरटेनमेंट खोजता रहता है, वो दूसरी जगहों पे जाके एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है. एंड इसलिए ये स्टार्टअप्स की, अगर यहाँ इस स्पेस में आपका स्टार्टअप है जो तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसका रिटर्न बहुत हाई होगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है. तो बहुत जल्दी आप एक साइजेबल चंक ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लेंगे. नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट एंड एट दिस नोट कि ऑल्दो आप तेजी से ग्रो कर रहे हो एंड आपका मार्केट साइज बड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि ये ग्रोथ आ कैसे रही है. अगर ये ग्रोथ बहुत सारा पैसा जला के आ रही है, राइट, तो इसका मतलब है कि शायद आप कोई एसेट नहीं बना रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, राइट. तो बेसिकली अगर मैं जाके करोड़ों रुपए जला दूं और बिलबोर्ड पे बड़े बड़े बैनर के ऐड लगा दूं, फेसबुक की इन्वेंट्री खरीद लूं, तो मुझे ग्रोथ तो दिख जाएगी. बट क्या वो उस एडिशनल 10 कस्टमर्स से और 10 कस्टमर्स आए, वो शायद जरूरी नहीं. तो इसलिए मैंने शुरू में ये बोला था कि बहुत से लोगों को, बहुत से इन्वेस्टर्स को, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि इन्वेस्टेबल एग्जैक्टली है क्या, राइट. एंड इसीलिए वो गलती होती कि हमने पैसा तो डाल दिया बट वो तो पूरा पैसा जल गया, क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर नहीं रहा था, या फिर हमने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई थी जो हमारी ग्रोथ को कंपाउंड करने में हेल्प करे. जनरली ये टेक्नोलॉजी होती है किसी ना किसी तरीके की जो आपको हेल्प करती है इस ग्रोथ को पाने में. ग्रेट. ओके, मतलब एक तो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाए, ग्रोथ का उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट उसकी बहुत साइजेबल हो, बहुत छोटी मार्केट ना हो, साइजेबल मार्केट हो. और तीसरी चीज, जैसे रेवेन्यू आ रही है उसके सोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि वो सोर्सेस कितने ऑथेंटिक हैं, मतलब राइट.
तो ये तीन चीजें हैं कि आपका रेवेन्यू मॉडल सॉलिड है, रिपीट कस्टमर है कि नहीं है, उसको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इज कमिंग बैक टू यू और नॉट. सो राइट, 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 ओके, ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, वेरी सिंपल एंड ग्रेट. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. श्योर, एंड नेक्स्ट स्टेप इज कि भाई स्टार्टअप तैयार हो गया और अब चाहिए सबको फंड. पैसे हैं भी लोगों के पास, पैसे नहीं भी हैं. हम मान के चलते हैं कि जिनके पास पैसे होते भी हैं, दे वांट टू ट्राई आउट दिस रूट ऑफ गेटिंग अ फॉर्मल फंड. श्योर, तो व्हाट, राइट, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द फंड, इट इज नेटवर्क्स एंड इट इज जस्ट ऑपरेटिंग, इट इज ऑल्सो नॉलेज. अगर किसी यस, कोई इन्वेस्टर से कोई पैसा उठाता है तो उसको कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो चीजें करने में ही इतना परफेक्ट हो जाता है. राइट. ऑल्सो इट इज वैलिडेशन, वैलिडेशन. राइट. अगर आप ही स्टार्टअप कर रहे हैं और आप ही पैसे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि ये केवल एक लोकल फिनोमिना, लेकिन कोई हम्म. बाहर से आके आपकी वैल्यू कर रहा है कंपनी की कि इतनी वैल्यू है, तो सही. शायद वैलिडेशन. यस. तो उसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए फॉर फंडिंग आफ्टर द पर्सन हैज द आइडिया? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फंडिंग? किस स्टेज पे फंडिंग के लिए किसी को सोचना चाहिए? राइट, गॉट पहले इट. तो एक लेवल पे वेट हो गया कि हाँ स्टार्टअप का आइडिया है, ये स्केलेबल है, ये सारे पैरामीटर्स फिट कर रहा है, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस जो बहुत राइट, टाइम लेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा. इट इज अ स्टार्टअप. अब उसके बाद राइट, एट व्हाट स्टेज फंडिंग के लिए जाना चाहिए? माय फर्स्ट क्वेश्चन. माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर कोई टीयर 3 सिटीज में बैठा हुआ है, किसी के पास कनेक्ट्स नहीं है बैंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बॉम्बे में, तो वो कहाँ पे अप्लाई करेगा वो फंडिंग के लिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट गॉट स्टेप? इट, गॉट इट. तो आई थिंक पहले सवाल पे डाइव करते हैं थोड़ा कि कब हमें सोचना चाहिए कि फंडिंग उठा ली जाए. तो मेरे पास, टू बी फ्रैंक सुशांक, बहुत से मैसेज आते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, राइट. एक बहुत सीक्रेट आइडिया, मैं आपको चैट पे नहीं बता सकता हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वाइल दिस इज, टू बी फ्रैंक, वेरी आई एम हैप्पी कि इंडिया आगे बढ़ रहा है और लोग सोचते हैं, ये क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर. बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना जरूरी है. वेन यू टॉक अबाउट कि मुझे फंडिंग कब उठानी है, आई थिंक अपने बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है. बेसिक में मुझे पहली चीज ये लगती है, आप कुछ नहीं करिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप खुद को इन्वेस्टर मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और ये इमेजिन करिए कि आपके पास कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आ रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, और वो एक आइडिया बता रहा है. क्या सिर्फ उस आइडिया पे आप पैसे दे देंगे? मान लीजिए आपके पास हैं करोड़ों रुपए, राइट. क्या आप दे देंगे आइडिया पे पैसे? बिल्कुल नहीं, चाहे कितना भी अच्छा आइडिया हो, राइट. इसी तरीके से आइडिया पे फंडिंग, ऐसा नहीं कि नहीं उठती है, देयर आर केसेस जहां पे लोग आइडिया पे फंडिंग उठाते हैं, बट देन दोज पीपल आर स्पेशल. दे ऑलरेडी हैव नेटवर्क्स, दे माइट हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप बिफोर, दे वुड हैव प्रूवन देयर वर्थ इन सम अदर वे. एंड लेट्स नॉट चेज दोज आउटलायर एग्जांपल्स. वो वो आउटलायर एग्जाम्पल है, वो एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर जिसको एक सस्टेनेबल, एक बड़ा धंधा बनाना है, एक बड़ा बिजनेस बनाना है, उनके लिए वो स्टोरीज इंस्पिरेशनल नहीं होनी चाहिए. तो अब अब कब सोचा जाए? तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपने आइडिया पे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करना है. बिफोर यू गो रेज फंड्स, इन्वेस्टर्स आर द वर्स्ट प्लेस टू टेस्ट वेदर योर आइडिया इज गोइंग टू वर्क और नॉट, राइट. टू रीजंस. नंबर वन, दे आर नॉट योर कस्टमर्स, तो वो आपको सच नहीं बताएंगे. एंड नंबर टू, बिकॉज यू विल गो देयर, जितने समय आप उनके साथ बताएंगे उतना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट बिल्डिंग योर स्टार्टअप, right? So what happens? A lot of people have an idea. They might make a pitch deck, and they keep running behind investors only to drain out their energy. थक जाते हैं. दूसरा सेकंड, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक्स विच आर नॉट यूजफुल, राइट. तो पहली चीज आदमी को ये, हम किसी को भी ये करना चाहिए, वो ये कि यू शुड बिल्ड अ प्रोटोटाइप, राइट. अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप सर्विस बना रहे हैं, What is a ढेरों केस के, prototype for our audience? What is a prototype? बिल्कुल मैं बताने जा रहा था वो. तो Yes. प्रोटोटाइप किसी भी तरीके, बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करें, तो जो भी आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, उसको अगर एकदम बेसिक लेवल पे आप बॉइल डाउन कर दें, तो वो जो दिखेगा उसको प्रोटोटाइप कहेंगे. इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको कार बनानी है, तो कार का प्रोटोटाइप में भी स्केटबोर्ड हो सकता है. कार का काम है पॉइंट ए से पॉइंट बी ले
रोड भी पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाता है, राइट? तो अब अगर मुझे थोड़े डिजिटल एग्जांपल्स देने हैं जो लोगों को और इंटरेस्टिंग लगे, तो फॉर एग्जांपल आप एडटेक ऐप बनाना है आपको, तो आप यूट्यूब पे लॉन्च कर, राइट? आपको डी टू सी बनाना है ब्रांड, आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दीजिए, राइट? आप बेसिकली द आइडिया इज कि आप एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट बनाएं जिसको आप जल्दी से टेस्ट कर पाए, ये देख पाए कि भाई वहां पे मार्केट में डिमांड कितनी है इस आइडिया की, राइट? एंड द बेस्ट वे टू डू इज बाय पुटिंग समथिंग रियल इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स। और अगर उनकी सच में वो नीड होगी, सच में उनको जरूरत होगी उस प्रोडक्ट की, तो उस छोटे से प्रोडक्ट को, उस शैबी से प्रोडक्ट को भी वो यूज करेंगे, राइट? अगर आप देखें ओयो के शुरुआती दिनों में उनकी एक पेज की वेबसाइट थी जिसमें 4 होटल लिस्टेड थे और फाउंडर का नंबर लिखा हुआ था, दैट वाज ओयो, राइट? उससे बेसिक नहीं हो सकता। लेकिन वो 4 होटल्स को उन्होंने मैनेज करते करते इतना सीख लिया कि वो इतनी बड़ी होटल चेन बन गया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट होटल चेन बन गया। तो मतलब नेवर शाई अवे फ्रॉम स्टार्टिंग स्मॉल। हाँ, एक छोटा प्रोडक्ट तो आपको रेडी करना पड़ेगा जो कस्टमर्स यूज कर पाए, उसके बिना राइट, ये पिच टेक लेके अपना इन्वेस्टर को मेल करने का कोई सेंस नहीं है, आफ्टर एंड अनलेस कुछ यू हैव अ वर्किंग प्रोडक्ट। ओके, राइट, राइट, वर्किंग किस अग्री। लेवल की होनी चाहिए बिफोर दे थिंक ऑफ मेलिंग द कस्टमर्स? क्या रेवेन्यूज नेसेसरी हैं? तो आई थिंक क्या 99.9 ऑपरेशंस, पर। क्या आप मतलब जस्ट फिनिशिंग द क्वेश्चन, श्योर, क्या श्योर। रेवेन्यूज नेसेसरी है? क्या अपना एबिलिटी एग्जीक्यूट करने की भी, इसका भी देना पड़ेगा एक प्रमाण कि हाँ वी कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट? तो किस लेवल तक का हो जाए तब इन्वेस्टर्स उसको कंसिडर करते हैं कि हाँ व्हाट ऑल बॉक्सेस दे नीड टू टिक बिफोर दे, आई मीन बिफोर दे सेंड दिस टू इन्वेस्टर? यस। श्योर, श्योर, अग्री। सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस, राइट? सबसे बड़ी दिक्कत आई थिंक अक्रॉस द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ये होती है कि आपको दूसरे को बेचना है, बाहरियों को बेचना है और खुद को सच बताना है। होना क्या लगता है कि आप खुद को बेचने लगते हैं, आप खुद को वो आइडिया सेल करने लगते हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा है, नहीं नहीं ये तो बहुत ग्रो करेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट काइंड ऑफ ग्रेट एंड कॉन्फिडेंस कि दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज वर्थ सॉल्विंग एंड पीपल लव माई प्रोडक्ट, राइट? जब तक आप सच में अपने प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं, अपने ग्रोथ से खुश नहीं है, तब तक वो चीज आपके इनफैक्ट पिच में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं नहीं मैं तो पिच कर ले जाऊंगा, 4 क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग्स इतनी आसान नहीं होती हैं, राइट? आपके 15-20 लोग बैठे होते हैं, चारों तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एकदम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं, जो लोग कॉन्फिडेंट है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, राइट? कि मैं सच में ठीक कर रहा हूँ क्या, राइट? तो तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम सॉलिड हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं दिस इज समथिंग विच इज ग्रोइंग, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दिस पोटेंशियल एंड नाउ आई एम गोइंग आउट। तो लाइक आई थिंक वो एक बहुत इमोशनल या कहें या फिर इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पिचिंग में भी हेल्प होगी। अगर आप ऑर्गेनिकली कॉन्फिडेंट हैं तो आप पिच भी बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा आई थिंक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको मार्केट साइज बताएंगे या फिर वो आपको रेवेन्यू चैनल्स बताएंगे। आपके पास प्लान होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि वो प्लान वैसे ही के वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए। प्लान होने का मतलब ये है कि आप दूरदर्शी हैं, आपके पास एक विजन है और वहां तक पहुंचने के संसाधन है, रिसोर्सेज हैं जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वो ठीक है, आप जब निकलेंगे रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, राइट? एंड इन्वेस्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट दोस चेंजेस, होते ही हैं, राइट? ज्यादातर बड़े होता प्रोडक्ट्स ही जो है, आज होता ही है। सारे चेंजेस होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उतनी बड़ी विजन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। And this is again a very important skill of a tech entrepreneur or a fast growing startup entrepreneur who can envision both big picture and small picture at the same time. On the other end, a normal business person who does not have that kind of ambition might not be interested in zooming out and zooming in or regularly, right? उसको उतना ही बड़ा धंधा बनाना तो ठीक है, मुझे नहीं सोचना कि 10 साल में $1 बिलियन कंपनी बनेगी कि नहीं बनेगी, बट यू शुड थिंक। तो आई थिंक रिसर्च इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, एंड
जैसे आपने सवाल पूछा कि रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है, हम्म, आई थिंक रेवेन्यू 99.9% स्टार्टअप्स में जरूरी होता है, क्योंकि हम्म। रेवेन्यू का मतलब है कि सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने, तभी वो पैसा निकाल के दे रहा है, और खासकर इंडिया जैसे मार्केट में जहां पे पैसा निकालना मुश्किल है, राइट? तो सुशांक, यू मस्ट बी नोइंग बेटर देन यस एनीबडी यस एल्स। यस, सबसे स्पॉइल्ड कस्टमर इंडिया का है, सबसे सस्ता चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए। सो हम लोग टू राइट, नाइन्टी नाइन का एक प्रोडक्ट बेचते हैं अपने यहाँ। श्योर। और कभी कभी उसमें भी कमेंट वापस आ जाता है, तो कमेंट आ जाता है कि उनको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। मैंने कहा बॉस, 299 में मैं कानपुर से बैंगलोर भेज रहा हूँ, आपके घर में हार्डवेयर का प्रोडक्ट आ रहा है और अच्छी क्वालिटी का है। अब और मतलब 300 रुपए के प्रोडक्ट में कोरियर भी लग रहा है, सब हो रहा है, कमीशन जा रही है, राइट, 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 बहुत अच्छा होता है लिटरली वो, बट इंडियन श्योर। की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत राइट। ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है। हम्म, उस रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ आ रही तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा, हम्म, राइट। लेकिन रेवेन्यू होने से ये चीज सॉल्व हो जाती है कि हाँ भैया, मैं कुछ हवाई किला नहीं बना रहा, देयर इज हम्म, अ रियल बिजनेस एंड देयर इज अ रियल कस्टमर इज पेइंग मी। आई हम्म, थिंक अगेन बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने, लेकिन आज के जमाने में व्हेन यू गो बैक एंड गो एंड सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग, right? कि they don't have paying customers. A lot of startups are not able to were not able to convert their free users into paid customers, right? मतलब अगर तो रेवेन्यूज होंगी तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर, मतलब इन्वेस्टमेंट के चांसेस सिग्निफिकेंटली हायर होंगे। अगर रेवेन्यू नहीं होंगी तो क्या, रेवेन्यू नहीं है तो कंसिडर करा जाएगा, अगर कन्विक्शन है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट रेवेन्यूज नहीं है, तो क्या कंसिडर करा हाँ, जाएगा? बिल्कुल कंसिडर तो हर चीज की जाती है, राइट? तो अगर आप, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ टेक वीसी इकोसिस्टम समझाने के लिए, क्योंकि हम्म, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट जहां से आता है वो भी एक बिजनेस है, राइट? तो मैं थोड़ा टाइम ये भी लूंगा समझाने के लिए कि ये जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री है, हाउ डज दैट वर्क, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट देयर इज अ पूल ऑफ मनी लाइंग अराउंड जहां से पैसे मिल जाते हैं, वेरी राइट? इंपॉर्टेंट टू नो, यस, हाउ डज दिस लेकिन वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री वर्क्स? यस। राइट, बिकॉज दैट इज द इंडस्ट्री विच इज फ्यूलिंग स्टार्टअप्स, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड उनके इंसेंटिव क्या है। तो जनरली एक वीसी फर्म जो है वो क्या करता है, देर आर एक्सपीरियंस फोक्स हु कम टुगेदर एंड से दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेंचर कैपिटल फर्म। Now, the venture capital firm basically has a promise कि वो budding entrepreneurs में इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे, एंड वो जैसे ग्रो करेंगे उनके बिजनेसेस, उनके रिटर्न्स वो कमाएंगे। लेकिन इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो दे इन टर्न रेज मनी फ्रॉम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, एंडाउमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स एंड सो एंड सो फोर्थ। तो डिफरेंट व्हीकल्स, डिफरेंट जगह से ये लोग फंड रेज करते हैं, एक पूल बनाते हैं, और उनको प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट 7 ईयर की फंड साइकिल है, किसी की 10 ईयर की फंड साइकिल है, एंड आइडियली उस फंड साइकिल में मैं आपको 3x 5x 10x रिटर्न दूंगा। नाउ इट इज वन ऑफ, इफ यू सी, इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जहां पे एक बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, और लिमिटेड पार्टनर्स, एलपीज कहते हैं, और उनसे यू आर गेटिंग मल्टीपल एक्स रिटर्न ऑन दैट बिग चंक ऑफ मनी, राइट? नाउ इफ यू सी कि अगर उतना रिटर्न बनाना है उस फर्म को, लेट्स से दे हैव रेज $200 million, ideally when they've closed this round in 7 years they should be giving out almost like $2 billion, right? तो ओके, अगर $200 million को उन्हें $2 बिलियन में कन्वर्ट करना है 7 साल में, बहुत बड़ा टारगेट है ये तो। ये बहुत बड़ा टारगेट है, और ये कॉमन है, लाइक हर वीसी फर्म का ऐसा ही टारगेट होता है। नाउ हम्म, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझको ऐसी स्टार्टअप्स चूज करने हैं इन्वेस्ट करने के लिए हम्म, जिनके ग्रो करने के चांसेस इन इन दिस 7 years ऑफ टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हो, राइट? आई हम्म, कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप विच इज लाइक अ 10 ईयर टाइम फ्रेम या 20 ईयर टाइम फ्रेम के साथ चल रहा हो, क्योंकि हम्म, तब तक तो मेरी फंड साइकिल पूरी हो जाएगी। देयर आर वीसीज बाय द वे हु ऑपरेट ऑन लॉन्गर टर्म फंड साइकिल्स, बट हम्म, जनरली आप जिनसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप पिच करते हैं, दे हैव दीज काइंड ऑफ फंड साइकिल्स। So what kind of investment opportunities they will be looking at? They will be looking at, people who are, highly skilled, who are highly ambitious, जो बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी या कोई एक ऐसे मार्केट इंसाइट्स पे काम कर रहे हैं जो किसी ने पहले नहीं देखा है, क्योंकि वो ग्रोथ एक हम्म, क्राउडेड मार्केट में नहीं आएगी।
हम्म। राइट? ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैंने वो बोला कि क्यों बिजनेसेस तेजी से ग्रो नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। 99.9999% स्टार्टअप यस। बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? हम्म। क्योंकि उनके कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, उनके मार्केट में डिमांड शायद उतनी ज्यादा नहीं है, एंड सो फोर्थ। राइट? हम्म। तो वीसीज ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पास कोई यूनिक इंसाइट है जो लोगों ने ओवरली लुक की हुई है, ताकि वो अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस आर हाई कि अगर आप सक्सेसफुल हुए तो बड़े होंगे, लेकिन हम्म। नहीं हुए तो इट्स ओके, बट होंगे तो बड़े होंगे। तो देयर बेट्स आर ऑलवेज प्लेस लाइक दिस, कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो चांसेस या तो है कि वो बंद हो जाए कंपनी, या तो वो $10 बिलियन की कंपनी बन वेरी जाए। डिफिकल्ट जॉब टू एनालाइज अ स्टार्टअप ऑन सो मेनी पैरामीटर्स कि 7 साल की राइट। साइकिल में या 10 साल की साइकिल में वो लिटरली स्टैंड आउट हो जाए और इतना हैवी रिटर्न दे जाए, और कोई कंपटीशन उसको कैचअप करे तो कैचअप करने में भी 5 साल पीछे हो वो लिटरली। राइट ना, उस 200 मिलियन को 2 बिलियन बनाने के लिए जनरली एक या दो ही ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो उस तरह का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हम्म। वो इन्वेस्ट तो कर रहे होंगे सैकड़ों स्टार्टअप्स में। हम्म। अगर $200 मिलियन हैं तो हम्म। आइडियली 70 to 80 स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। हम्म। तो आप ये भी सोच सकते हैं वहां से कि 70 to 80 स्टार्टअप्स में हार्डली 3 और 4 स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, राइट? इतना बड़ा मतलब वो रेशियो होता है 70 to 80 में 3 से 4 बस सक्सेसफुल होंगे, और वो इतने जी हाँ। सक्सेसफुल होंगे कि वो इतनी बड़ी ग्रोथ दे देंगे 200 मिलियन में, मतलब 3 से 4 को कमी राइट मिलेगा, राइट? 20 मिल राइट सकता राइट। है, 30 मिल सकता है, 3 से 4 को कितना ही मिल जाएगा डिवाइड रेशियो अगर हम हाँ। देखें। राइट तो राइट वो राइट। इतने रुपए को इतना ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। कितने ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, एंड वही वो स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड। तो ऐसा नहीं है कि वो जो 69 या 68 स्टार्टअप चूज कर रहे हैं उस पे उनको कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उनको सब जगह, लेकिन किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है। तो दे हम्म। वांट टू मेक श्योर कि मैं उस पे बेट करूं जिसका चांस बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि जब व्हेन दे आर गोइंग टू रेज फंड्स, इट माइट बी द केस कि आपका बिजनेस और आपका स्टार्टअप इज वेरी वैलिड, इट कैन ग्रो टू हम्म। अ decent साइज, ऑल हम्म। ऑफ दैट। बट हम्म। दैट आउटसाइज रिटर्न्स जो बनाने, क्या वो बना सकता है आपका स्टार्टअप? क्या हम्म। ऐसा है कि इट विल ग्रो लाइक 10x 20x इन द कमिंग फ्यू years, which is it's not imaginable for a lot of folks, right? अच्छा, So बस एक अपनी उसके क्यूरियोसिटी आउट ऑफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि right, a lot of startups failing, we see a lot of them hmm, failing or burning a hmm, lot of money or not achieving profitability itself, you leave the returns for investors, right, this is what we are seeing these days. तो right. वैसे आप जैसे, if you know like 5-7 VC funds, Hmm. do they really make that kind of money, 200 को 2 बिलियन? वो बेसिकली, अदरवाइज दे विल नॉट स्टे देयर। आप ये सोचो ना, जिन्होंने 200 मिलियन डाला है वो इसलिए डाला है कि दे विल गेट 10x रिटर्न्स। इफ दे आर नॉट गेटिंग 10x रिटर्न, there are better investment vehicles where they can put their यस। money, यस। right? There is मतलब वो हो entertainment ही जाते हैं industry. प्रॉफिटेबल, हम लोग को बेसिकली वो 70 में से 66 को हम देखते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट वो वीसी अपना काम तो 10x ग्रोथ कर ही लेता है, रह के हो ही जाता है मैक्सिमम केसेस शायद में। शायद जरूरी नहीं, वीसी फर्म भी बंद होते हैं। यस, दिस इज व्हाट आई वीसी वांटेड टू नो। फर्म, यस। राइट राइट। हाँ, तो जो स्टैंडिंग है, इसीलिए why do people go to big VCs? Because if हम्म। they are there in the market for past 30 years, 40 years, इसका मतलब they have gone through multiple fund cycle and they have developed a knack or understanding of picking right startups. तो why do people get demotivated कि उनको बड़ा वीसी ने फंड नहीं दिया? क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास वो मैजिक सॉस नहीं है जिसकी वजह से भी आई विल ग्रो दैट फास्ट, राइट? नाइस So, नाइस नाइस। so I think coming back to the original point, entrepreneurs will have to understand कि आप, हो सकता है कि अगर आपको एक लाइफस्टाइल बिजनेस बनाना है, आपको बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाना है, प्लीज गो एंड मेक, डोंट रन आफ्टर समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, एंड जस्ट बिकॉज आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको भी यू वांट टू स्टार्ट अ टेक स्टार्टअप, राइट? बिकॉज इट हैज डिफरेंट डायनेमिक्स, इट इज वेरी हार्ड, एंड वंस यू हैव प्रूवन, वो प्रेशर भी आप ही पे है। ऐसा फंड उठाना इज द स्टार्ट ऑफ थिंग्स। वंस यू रेज $2 million, आइडियली वो $10 million की वैल्यूएशन पे होगा, एंड अगला राउंड आपको 6 महीने में क्लोज करना होगा या 1 साल में क्लोज करना होगा, जिसकी वैल्यूएशन शायद जिस समय आपकी $50 million होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको, अगर $50 million वैल्यूएशन होनी चाहिए तो 5 मिलियन का रेवेन्यू भी होगा कहीं ना कहीं, या 2 मिलियन का रेवेन्यू होगा कहीं ना कहीं। तो क्या आपको वो दिखता है अपने स्टार्टअप का पोटेंशियल?
ये ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्दो अभी मेरे पीछे के भी क्वेश्चंस बचे हैं पीछे के, श्योर, क्योंकि प्लीज गो अभी अहेड। आपने वीसी बताया, बट आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर ऑडियंस की जो टियर 3 सिटीज है वो वीसी को डायरेक्ट नहीं अप्रोच करेगा, और वीसी हम्म। भी एक स्केल के ही लेंगे भाई, जो इतना 200 मिलियन को करना है वो तो एक स्केल का ही राइट। स्टार्टअप लेगा। तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाट आर अदर एवेन्यूज ऑफ रेजिंग फंड्स अपार्ट फ्रॉम वीसीज, एंड जो टियर 3 के लोग को अगर स्टार्ट करना है तो इज इट द करेक्ट वे टू मेल टू अ वीसी, देन वह कहाँ से ढूंढे, क्या करें, और देर आर एनी ऑल्टरनेट चैनल्स जैसे इंक्यूबेशन हो गया, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हो गए। सो आई बी स्पीकिंग ऑन दैट, बट अभी आपने वाला क्वेश्चन किया है कि 6 महीने बाद दूसरा राउंड उठाना है, तो मैं इसको एक पूछ लेता हूँ कि जब हम्म। वो 10-15 मिलियन उठा लिया किसी ने, या 5 मिलियन उठा लिया, या $2 मिलियन उठा लिया, तो इतनी जल्दी क्यों रेस करना है? क्योंकि टाइम लगेगा बर्न करने में, 10 करोड़, 5 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, ये ऐसा क्या प्रेशर होता है कि 6 महीने बाद एक और राउंड रेस करना है? राइट। और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है भाई, 10 करोड़ लगा के प्रॉफिटेबिलिटी आ गई और उस प्रॉफिट से ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, राइट? और राइट। अग्रीड। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, आई रियली वांट टू फिगर आउट कि हम्म। फिर 6 महीने बाद फिर उन्होंने 20 करोड़ रेस कर लिए, फिर एक साल बाद फिर वो रेस कर लिए उन्होंने, क्योंकि नॉर्मल बिजनेसेस को हम देखें तो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि इतनी जल्दी राइट। जल्दी क्यों रेस करते हैं और कैसे कर लेते हैं। राइट। अग्रीड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फंड साइकिल 7 साल की है। राइट। अगर आप में इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट मिला है, तो कहीं ना कहीं आप उस फंड साइकिल के पार्ट है। यस। अगर अगर वो पोटेंशियल है, तो वो 10x ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, एज वन ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनीज ऑफ दैट वीसी। राइट। तो और वीसी किस में इंटरेस्टेड है? वो तो उसी में इंटरेस्टेड होगा ना जो 10x ग्रोथ करते हुए दिख रहा होगा। अगर आप 2 मिलियन उठा के बोलते हैं कि नहीं, तो मैं तो प्रॉफिटेबल कर लूँ, मुझे तो जल्दी नहीं है, तो हाँ। वो कहेगा ठीक है, फिर तुम बनाओ, मैं बाद में आता। ठीक है। वो ये बोलेगा कि मैं टाइम स्पेंड करता हूँ बाकी इन्वेस्टर ये स्टार्टअप के साथ जो तेजी से ग्रो करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम्म, अगर आपकी कंपनी की वैल्यू तेजी से ग्रो नहीं करेगी, तो जो हम्म, शेयर्स मैंने खरीदे हैं उसकी वैल्यू वही रह गई 2 साल हम्म, बाद, 3 साल बाद। तो अगर वो वही वैल्यू रह गई, तब तो मुझे रिटर्न मिला ही नहीं। मुझे हम्म, रिटर्न नहीं मिला तो मैं कैसे दूंगा अपने हम्म, एलपीस को? तो इट हम्म, इज इसीलिए वो फंड साइकिल वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि भाई वो 7 से 10 साल का फंड साइकिल है, आप उस फंड साइकिल का पार्ट हैं अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट मिला है। हम्म, एंड बिकॉज इन दैट फंड साइकिल यू हैव टू दे हैव टू गिव 10x रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर्स, you हम्म, have to grow your startup 10x. If you are not growing your startup by 10x, their interest will shift to other startups who are हम्म। ready to grow there. तो मतलब एक हम्म। एवेल्युएशन करेंगे वो पैसे देने से पहले कि ठीक है इतने पैसों में इतना ग्रो हो गया, और दे विल बी वेरी श्योर कि ठीक है और डालो, उसमें 10 करोड़ डाल दिया और 20 करोड़ रुपए डालो, हम्म। मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स पे वर्कआउट कर लेंगे सारे, और फिर वो 20 करोड़ देते हैं, ऐसे नहीं कोई रेस कर लेता फिर राइट। 20। राइट। और एक समय के बाद शुरू में तो आपके आइडिया पे पैसे डलते हैं। सीड राउंड हो गया, प्री सीड, सीरीज ए भी चलिए, मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। बट हम्म, उसके बाद आइडिया पे पैसे नहीं मिलते। केवल आइडिया डज नॉट वर्क आफ्टर दैट। देन योर कंपनी हैज रियल रेवेन्यू, तो उसका रियल रियल वैल्यूएशन है। भाई हम्म, अगर आपकी कंपनी का 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है साल का, तो हम्म, 200 करोड़ की वैल्यूएशन कमांड नहीं कर सकते आप। राइट। 100x वैल्यूएशन नहीं हो सकती। कोई कंपनी, कोई इंसान अगर 20,000 रुपये महीना कमाता है, तो उसको आप ये तो नहीं बोल सकते ना, अरे ये तो करोड़पति है, जब कमाते ही 20,000 रुपए, कितना कैसे करोड़पति बोल सकते हो उसको? सिमिलरली स्टार्टअप के साथ भी है कि अगर आप कम कमा रहे हैं, कम ग्रोथ है आपकी, तो फिर आपको कैसे वो वैल्यूएशन मिलेगी? मतलब तो जो कंपनियां रेस करती हैं लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस करा होता है अपने फर्स्ट राउंड के साथ, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होती हैं, तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी रेस करते चले आते हैं, उनको मिलता भी जाता है, ये ऐसा नहीं तो होता है। हाँ, अग्रीड। तो आई बस उन्होंने थिंक मांगा और उनको मिल गया और इतना वैल्यूएशन, सो दे हैव टू डू सम रियल जस्टिस टू व्हाटएवर दे गेट इन एवरी राउंड टू गेट बेटर वैल्यूएशन एंड इवन द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड्स, एंड ये बहुत जल्दी इसलिए करना पड़ता है ताकि वेंचर कैपिटल फर्म की साइकिल टाइमली उनको अपना रिटर्न मिल जाए, 10x रिटर्न मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स द ट्रूथ। बट आई जस्ट गिव यू अ क्विक कैवियट, शायद इससे थोड़ी ऑडियंस कंफ्यूज भी होगी। तो अगर लोग कंफ्यूज हो तो प्लीज इस पार्ट को भूल हम्म, जाए। हम्म, ऐसा होता है कि लोग 6-6 महीने में फंड रेज करते हैं विदाउट सिग्निफिकेंटली ग्रोइंग देयर कस्टमर बेस और रेवेन्यू। ये तब होता है जब आपका बुल मार्केट, तो शायद लोगों ने ये टर्म सुना हो, बुल मार्केट चल रहा है। अब ये बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट वो होता है बेसिकली
जहां पे इन्वेस्टर जानबूझ के एक ऐसी जगह पे पैसा डालने को रेडी है जहां पे कुछ रियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, फिर हम्म भी उसका दिल कह रहा है यार ये तो ग्रो करेगा। तो वो दिल कह रहे हो, दिल की बात मान लेते हैं। और ऐसी बहुत सी फंडिंग पास्ट में हुई है, ऐसे ऐसे बुल साइकिल्स आए हैं जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी, कस्टमर बेस की ग्रोथ नहीं थी, लोगों ने पैसे डाल दिए। एंड आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू नेम द स्टार्टअप्स, बट वी ऑल नो कि उन स्टार्टअप्स के साथ फिर क्या हुआ, राइट? हम्म सो दैट इज वन कैवियाट। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छा सॉलिड टेक स्टार्टअप बनाना है, तो जैसे कि हम्म पहले मैंने कहा, आप एक बड़े मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहे होंगे, तभी हम्म। आप वो बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से बुल रन एक दो बार गलत हो जाए तो फिर इन्वेस्टर्स ही बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि जैसे आज का मौसम है, हाँ आप ये देखिए, हाँ। ऑल टेक इन्वेस्टर्स आर वेरी कॉन्शियस। हम्म अब बिना रेवेन्यू के फंड उठाना बहुत हार्ड है, अनलेस यू हैव डन इट बिफोर, राइट? तो कोई ऐसा ना सोचे कि बुल रन का वो हो जाएगा, 100 में एक तुक्का लग जाएगा, मतलब थिंग्स आर जेन्युइन, थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ, Genuine things will always work. विल ऑलवेज वर्क। Genuine things will always work. So one should focus on building that as opposed to chasing news. ग्रेट। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक ये वाला डिस्कस करा, अब हम इसमें से थोड़े बहुत चीजें निकालते हैं। सबसे पहला तो वेंचर फंड, लिटरली ये तो एक बड़े लेवल पे ही कोई रेस कर सकता है। Right. कौन सा वो लेवल है जब वो वेंचर फंड रेस कर सकता है? मतलब आई एम श्योर कि क्या वो सिर्फ पिच टेक पे या प्रोटोटाइप पे वेंचर फंड भी रेस कर सकता है? और वेंचर फंड में सबसे पहला राउंड जो सीड राउंड होता है वो कितने, किस लगभग क्या अमाउंट का होता है? Sure. तो किस लेवल पे रेस कर सकता है? बहुत सारे लेवल्स हैं, बट जनरली स्पीकिंग, आपके पास एक वर्किंग प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ कस्टमर्स होने चाहिए, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ बनता हुआ दिखना चाहिए, राइट? आपकी एक वेबसाइट है जिसपे लोग आते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको रेवेन्यू मिलता है, कुछ छोटा मोटा ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया है, ग्रोइंग रैपिडली, जो लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं, दे रियली हैप्पी, दे गशिंग अबाउट द प्रोडक्ट, वो अब और लोगों को बता रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जनरली वो एक बहुत सॉलिड टाइम होता है फंड रेज करने के लिए, क्योंकि यू हैव जस्ट स्टार्टेड आउट एंड यू आर सीइंग ऑल द पॉजिटिव सिग्नल्स, राइट? अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल इश्यूज आ जाएंगे, चैलेंजेस आ जाएंगे, वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, राइट? तो मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप बहुत टाइम लगा दिए तो ऑब्वियसली पूरा कच्चा चिट्टा खुल गया है, आपके पास मंथली बैलेंसेस हैं, आपकी एमआईएस बनी हुई है, तो फिर तो इट्स क्लियर कि भाई इसमें तो इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप शुरू किए हो तो अभी तो सब कुछ नया है, लाइक सब कुछ न्यू है एंड एवरीथिंग इज गुड, तो उस समय फंड रेज करने का प्राइम टाइम होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये दिखता है कि ओके दिस इज समथिंग विच इज कुकिंग, विच वी कैन इन्वेस्ट इन एंड दिस विल ग्रो बिग। तो ओके। सो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू डू। And what value to chase? What value to chase to when the one is just starting off? राइट, तो आई थिंक जनरली इट डिपेंड्स लॉट ऑन स्टार्टअप्स। Yes, मतलब yes. आप टेक स्टार्टअप बना रहे हैं, डीप टेक है, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है। कंज्यूमर बना रहे हैं तो 1-2 मिलियन में हो जाएगा। एंटरप्राइज बना रहे हैं तो भी ऐसा है। तो टू बी फ्रैंक, आपके हाथ में बहुत नहीं होता है कि आप कितना फंड उठा पाओगे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपकी वैल्यू सामने वाला डिसाइड कर रहा है, राइट? तो यू कैन गो विद अ बॉलपार्क फिगर कि अच्छा मुझे समवेयर बिटवीन 500K टू 2 मिलियन उठाना है, उससे मेरा ये प्लान है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ग्रो। बट ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जैसे डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीजें टेबल पे आएंगी, दैट अमाउंट कैन गो अप गो डाउन। व्हेन इट कम्स टू एट व्हाट टर्म्स यू शुड रेज, आप पैसे उठाएंगे तो कुछ शेयर भी देंगे उनको, राइट? तो वो टर्म के लिए आई थिंक अर्ली ऑन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। दे शुड नॉट डाइल्यूट अ लॉट ऑफ इक्विटी इन द अर्ली राउंड्स ऑफ फंड रेजिंग। How much in the first round? Just a rough figure. हाँ, तो रफ फिगर आई थिंक वुड बी गुड इज 10 to 25%। टेन Okay. परसेंट से 25% के बीच में आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई वीसी फर्म आपके इन्वेस्ट कर रहा है, अगर केवल एंजल्स हैं, जिसके बारे में बात बात करता हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, अगर एक कन्वेंशनल वीसी फर्म नहीं है तो आप 10% से नीचे में भी अपना राउंड क्लोज कर सकते हैं।
ओके, तो मतलब कंज्यूमर बिजनेसेस हैं तो अराउंड $2 million का राउंड हो सकता है, मतलब 500 टू $2 million का राउंड हो सकता है। राइट और राइट, अगर डीप टेक है तो और भी मिल सकता वो है। अलग ही है, हाँ, अग्रीड। तो मतलब क्या सीधा वीसी को भी मेल कर दें, वहां से भी काम हो जाएगा? जरूरी नहीं है कि आप ऑल्टरनेट चैनल्स ढूंढो जैसे एंजल्स के या इंक्यूबेशन के, मतलब सीधा वीसीज भी एक्सेप्ट करते हैं ये सब? हाँ, तो आई थिंक वो दूसरा क्वेश्चन है। वीसीज आजकल बहुत एक्टिव हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डील्स। हम्म। सो ऑफ कोर्स योर गेट्स आर ओपन। अर्ली स्टेजेस आपके 0 to 5 years ऑफ स्टार्टअप जर्नी में मोस्टली आप कभी भी वीसीज को रीच आउट कर सकते हैं, एंड वीसीज आर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट डील। होता क्या है, क्योंकि ये छोटे फंड साइजेस, छोटे फंड्स हैं, छोटे फर्म्स हैं, बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं इन वीसी फर्म्स में, राइट? सो जनरली यू विल हैव 20 people, 15 people, 30 people वर्किंग, राइट? सो दे विल ऑलवेज चूज whom टू रिस्पॉन्ड। अगर आप उनको एक कोल्ड मेल डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स मिले, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि मैंने सिकोया को मेल लिखा बट रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, क्योंकि सिकोया के पास इतने सारे लोग नहीं है कि सबको रिस्पॉन्ड कर पाए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल वीसी के पास जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उनके इन्वेस्टेड एंटरप्रेन्योर के थ्रू एक इंट्रोडक्शन पा पाए। अगर वो इंट्रोडक्शन मिलेगा तो वो मीटिंग के चांसेस हम्म। सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं, हम्म। एज अपोज टू कोल्ड ईमेलिंग देम। हम्म। Also, talking about angels and incubations, I think they are a wonderful way of raising early funds, especially जब आप बहुत श्योर नहीं है, जब आपको श्योर नहीं है कि ये क्या शेप लेगा, एक आइडिया है, कुछ कुछ चल रहा है, तब आपको एंजल्स को रीच आउट करना चाहिए, इंक्यूबेशन सेंटर को रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए देयर एक्सपर्टीज इज इन दिस। दे विल हम्म। हेल्प यू चूज द आइडिया, दे विल हेल्प यू, दे विल बी पेशेंट इनफ कि चलो भाई करो, वी आर हम्म। देयर विद यू, राइट? बिकॉज दे आर नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ फंड साइकिल्स। They are हम्म। individuals, they are okay to wait out 1 year before you start growing. सो इक्विटी हमें हर केस पे देनी पड़ती है, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो एंजल्स के पास जाएं। तो इस प्राइवेट लिमिटेड द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन शुड हैव? आई थिंक अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप शायद बहुत फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बनाना भी नहीं चाहते होंगे, शायद आप एक लाइफस्टाइल बिजनेस बनाने की नहीं, कोशिश क्या कर ऐसा रहे होता है होंगे। कि अभी कोई प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करे, कुछ हाँ रेवेन्यूज हाँ, करे वो, क्योंकि प्राइवेट कन्वर्ट कर लिमिटेड सकते हैं। छोटे सेंस में, और फिर उसको कमिटमेंट मिल गया। ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर्स एंटरटेन ही नहीं करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं है सो नहीं नहीं, ऐसा कुछ हम। नहीं, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेज यू कैन चेंज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, दैट्स नॉट अ बिग आफ्टर डील। दे हैव अप्रूवल फ्रॉम इन्वेस्टर्स और वो सही ठीक है आप प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, वी आर देयर टू बैक यू। यस यस नाइस। यस, नाउ अभी हम समझ रहे हैं Tier 3 सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई वहां बैठ के काम कर रहा है राइट तो वीसीस के पास डायरेक्ट कोई लिंक हो चांसेस आर वेरी लेस। ठीक ट्रू। है, तो क्या नेट पे लिखे गूगल पे कि वीसीस कैसे ढूंढे अपने लिए, पहली चीज। और वीसीस ना ढूंढे तो एंजल्स को कैसे ढूंढे, एंजल्स का ढूंढे तो इंक्यूबेशन को क्या ढूंढे। एंड आई वुड ऑल्सो वांट, बिकॉज यू आर अ वाई कॉम्बिनेटर ग्रेजुएट, तो अभी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट व्हाट इज रियली इंक्यूबेशन, और अगर इंक्यूबेशन का रूट, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आईटी राइट कानपुर में इंक्यूबेट हुआ था। राइट, मतलब एंड आई वांट पीपल टू नो अबाउट इट, दिस रूट। करेक्ट, सो श्योर, यस, कि Tier 3 में करेक्ट, बैठा है वीसी, उसका मेल एंटरटेनिंग करेंगे या कर भी लेंगे तो दैट इज वन चैप्टर। बट व्हाट आर अदर ऑप्शंस विच हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड? एंजल्स को ढूंढे करेक्ट, तो कहाँ से ढूंढे, लिटरली क्या क्या लिखे गूगल पे, हाउ टू फाइंड राइट, एंजल्स? यस। करेक्ट करेक्ट। सो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इन्वेस्टर्स खोज रहे हैं, आपके मार्केट में अभी भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स होंगे ऑलरेडी, जिन्होंने फंड उठाया होगा, राइट? उनके बेसिकली आपको ये देखना है कि उन स्टार्टअप्स में कौन से इन्वेस्टर्स, जो भी एंजल्स थे, जो भी वीसी फर्म थे। ये आपको crunchbase.com करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में ये 5 और स्टार्टअप्स हैं मेरे ही मार्केट में, और इनमें इन इन वीसीज ने इन्वेस्ट किया हुआ, इन एंजल्स ने इन्वेस्ट किया हुआ। तो दैट्स द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, उन्हीं ऑफ को फिगरिंग रीच आउट। आउट कर लें। उनको, क्योंकि उनकी ऑलरेडी थीसिस होगी, दे आर ऑलरेडी ओके। इंटरेस्टेड इन योर मार्केट।
So Nice. very high chances कि they are going to invest. In fact, VCs are divided by markets a lot of times. There are very few VCs जो सारे तरह के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. There are तो VC फर्म भी अपनी थीसिस लेके चलता है कि ये मार्केट या इस तरह के प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैं ये मार्केट ज्यादा अच्छे से समझता हूँ. तो इसलिए वो एक सबसे अच्छा तरीका है टू फाइंड द एग्जैक्ट राइट काइंड ऑफ वीसीज एंड एंजल्स जिससे आप उठा सकते हैं. दूसरा तरीका है, ऑब्वियसली आप योर स्टोरी फॉलो कर सकते हैं, आप डिफरेंट न्यूज आउटलेट्स फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे फंड रेजिंग अनाउंसमेंट आए दिन आते रहते हैं. यू कैन you know find which investors are active, which VCs are active, and you can reach out to them. बट अगेन आइडिया यही होना चाहिए कि कोल्ड ईमेल के चांसेस रिप्लाई के बहुत कम होते हैं. तो कोशिश करिए कि अगर आप लिंक्डइन पे किसी से कनेक्टेड हैं जो उनको जानता है तो उनसे यू गेट एन इंट्रो. और if you are sending a cold email, then try to make it as fancy as possible, because they have a lot of cold emails to reply अब to. तो वीसीज के पास भी सब जीपीटी से वेटेड होते हुए आते होंगे, वो भी सोचते होंगे यार कितने इंटरेस्टिंग ईमेल्स आने लग गए, अब तो सभी बड़े अच्छे लग रहे हैं. उससे कह दो कि ऑप्टिमाइज इट फॉर वीसी, दिस वीसी हु हैज डन दिस. वो True, true. ऐसे ऑप्टिमाइज करके आते हैं अब तो. बहुत डिफिकल्ट होने वाला है Agree. सबके लिए. वो भी यही Right, लगा के right. बैठेंगे कि एआई डिटेक्टेड को हटा दो. True, Okay. true. Right. And talking about incubation, जो आप Yes. कह रहे थे, I think it's a very sane route to take. क्योंकि जब आप अर्ली ऑन एक सपोर्ट खोज रहे हैं, जब आप बहुत श्योर नहीं है क्या होगा, आपको रिसोर्सेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, बहुत सारे छोटे छोटे टैक्टिकल इश्यूज आते हैं, आपको सर्वर कॉस्ट आपको देखनी है, आपको एड चलाने हैं, कुछ क्रेडिट चाहिए, आज पैसे नहीं चलाने मुझे, राइट. एंड बहुत सारे छोटे टूल्स हैं जो पेड हैं, जो आपको जिसके लिए यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी. So incubation centers are generally very good in that sense that they give you a lot of deals in all these, with all these tools and credits across the ecosystem. Beyond that, they also provide a lot of mentorship and expertise, specifically if you are starting up in their domain. And thirdly, it also gives you a network of or a community of other founders to learn from other people who are starting up something. How are they doing it, and what you can learn from them. So I think it's a very very good way to start, especially if you're very early in your in your startup career and you want some help. And what do they take? How much equity do they take? So I think different incubators have different kind of structure, right? There are incubators who are on pro bono basis, right? They just do it for the sake of their program. There are also incubators who fund you, who give you certain amount of money and take certain equity in return, just like a VC or an angel investor. And there are also incubators that I have come across, which work on fee share model, which is they have a fixed fee. You can give that and avail their services. Generally, But these incubators in India, that if people are looking to avail these services, they should try, as you said, IIT Kanpur. They should try and reach out to these institutions who are well established. वहां से they can get a lot of support and they can get started. मतलब one has to write in Google incubation centers या top incubation centers in their Yes, region or right. right. राइट. Okay, एंड nice. यहाँ पे फेयर होता है प्रोसेस जनरली. यू कैन Hmm. उनका एक एप्लीकेशन प्रोसेस होगा. यू डोंट नीड अ कोल्ड इंट्रो या Hmm. फिर बॉम इंट्रो. यू डोंट नीड Hmm. टू कोल्ड ईमेल देम. एक प्रोसेस है, उसकी टाइमलाइन है, आप उसको फॉलो करिए. इफ यू गेट Hmm. सेलेक्टेड, वेल एंड गुड. Great. अब हम आते हैं वाई कॉम्बिनेटर में. World's biggest and the best incubator. राइट. So you made it to Y Combinator. My first question is, when did you make it? You made it for Able Jobs? यस. Great. So at what stage you entered Y Combinator? Did you had raised any funds before you made it to Y Combinator, or it happened after that? And what was the application process there? And राइट. yes, please also tell our audience what is the take rate over there. Sure, Yes. of course. So we started our startup Able Jobs in 2019. Hmm. This is April 2019, and we got into Y Combinator in November 2019.
right? Wow. So, So and it yeah. started as a bootstrap venture. Yes, yes, yes. So we did not raise any money upfront. We had all the three founders had some kind of investments and basically savings with us. So we Mm-hmm. said that we are going to take that plunge. We are going to start something on our savings. तो हमने तब स्टार्ट किया था 6 महीने में हमने वाईसी में वी गॉट सेलेक्टेड वी डिड नॉट रेज एनी मनी बिफोर दैट Hmm. although we had some commitments we started getting some commitments from angels but Hmm. we did not raise it was in the process and by then we got the acceptance about Hmm. the application process so very straightforward by the way Hmm. aap ycombinator.com is the website you go and you can read everything about their what the program is how they run and everything but basically talking about application process you have to fill out a form which Hmm. is basically 12 to 15 questions about your own startup Hmm. and you can submit that before a deadline so twice a year you can you can submit your application there are two batches. One is winter batch, one is summer batch, in which they admit startups. तो आप वो application fill करके submit करिए. You get selected. You get the result in 3 weeks. And if you get selected, then you have to give an interview, which Hmm. is with the partners of the Y Combinator. This interview is just 10 minutes long. Wow. Not less, not more, just 10 minutes online. They will come, you will have to explain, they will ask few questions, you'll have to Hmm. answer. Hmm. And the very next day, Hmm. either you get a rejection email or you get a call that you were selected. ओके, ये सब इंडिया से ही होता है, अभी आपको कहीं कुछ नहीं जाना, सिर्फ आपने ऑनलाइन Correct. अप्लाई करा और ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। इफ Right. यू गेट सिलेक्टेड, ठीक, Right. मतलब इफ यू गेट सिलेक्टेड यू गेट अ कॉल, एल्स यू गेट अ मेल। Yes. ग्रेट। Yes. तो अब होता है उसके Correct. बाद क्या होता है, मेल आने के कितने टाइम बाद आप लोग यूएस मूव करते हो? हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी, जस्ट क्विक इन जस्ट Hmm. टू लाइंस यू कैन टेल व्हाट इज वाई कॉम्बिनेटर टू आवर ऑडियंस Of एंड व्हाट डज course. इट मीन? यस, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग मोर Right. अबाउट दिस। Yes, yes, for sure. So Y Combinator happens to be an incubation center, as we were discussing, right? It's a startup accelerator kind of model where they they invest in a bunch of startups twice a year. It's may they invest $150,000 for 7% equity. So once they decide to invest, they are going to put in $150,000 in your startup, and they take 7% of the equity and you have to fly down to San Francisco, US. वहाँ पे 3 महीने का program है where you go through that program and after the program you have a demo day where a lot of other investors come in to invest even further in your startup. So why is it special? So it is special because YC has been here for around 15 years now, and almost all of the top companies that we see and admire today, like Airbnb, Dropbox, Stripe, Razorpay, Meesho in India, Grow, all of these startups have been funded in the early stages by Y Combinator. Why are they so successful? Why? Because it is started by few people who are really smart about taking about growing startups, about helping startups in real sense. So it was founded by Paul Graham and a couple of his friends. And essentially, they are themselves entrepreneurs. They have started companies, sold companies, and they're veterans in the Silicon Valley, which is the holy grail of startups. So they have a lot of knowledge, a lot of intuition about what works, what does not work, how you need to work hard, during the early stages, what kind of hard work is good, what kind of hard work is bad, all those interesting nuggets that you're looking for that is actually an action-packed 3 month program, which is by Combinator. So it must be expensive to go to US. So you have to put in your own money to stay there. They only sponsor the tuition fee, or you get some support from of flight tickets and staying over there. Okay. So they invest $150,000, and that is basically your company's money.
So you can use that money in order to go, because it's business expense. You are growing your business, so Mm-hmm. you can use the same amount to for the travel and for the stay during that period. Okay. And is private limited required before you apply there? No, it doesn't. It is not at all required to be a registered company. It could be just an idea. It could be a product which is not a company right now. All kinds of startups of all forms and sizes can actually apply. Wow. And once they decide, of course, they help you incorporate. One small thing though, in order to raise funds from YC, you will have to register your startup in US and not in India. Oh my God. Yes, but it's a very simple process. It's not at all hard. In fact, it's easier than India. And you once you do that, you can raise funds. And will it be acceptable in India? We'll get GST and everything. So, Yes, so basically, Indian startups, what do they do is they create one more company, which is a subsidiary to the US company in legal terms, right? And you mm, operate, and all your revenue and everything comes to this company in India, while this company is owned by the US company, legally speaking. mm. And you are only the partner or director in that US Yeah. company. Yes. Yes. Okay, nice. So 3 months power packed at Y Combinator, you had chance to spend there. Yeah. You and other two partners also in your company, founders Yes. also. Yes. Yes. Okay, wow, great. So this was Y Combinator. Hmm. 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 Now, I think I can spend some more time in helping people understand what is Y Combinator, like what happens inside Y Combinator. yes, I was hesitating in asking because I had because I Right. thought it would be too much about that. So please tell what Uh, happens in those 3 months. How was it? yes. Yes, बहुत So इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है और मेरे को नहीं लगता है कोई कभी किसी ने बताया है किसी ने पूछा है हिंदी में right, right. खासकर राइट तो 3 महीने बेसिकली सारे स्टार्टअप्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देते हैं. ओके. जनरली ये जियोग्राफी के ऊपर होता है. आप अगर इंडियन स्टार्टअप्स हैं तो कोशिश करेंगे कि सारे इंडियन स्टार्टअप एक ग्रुप में आ जाएं. आपके साउथ एशियन स्टार्टअप एक ग्रुप में आ जाए, तो ऐसे करके आप इमेजिन कर सकते हैं 6-7 ग्रुप्स बन जाते हैं. हर ग्रुप के कुछ मेंटर्स होते हैं जो वाई कॉम्बिनेटर असाइन करता है. These are in they are themselves veteran startup leaders. They are most probably आपको जो जो एडवाइस दे रहा होगा, that person would have started a $1 billion company, has exited from that startup, and now has come to help you, right? So it is generally very interesting to hear their stories and learn from them. बट स्ट्रक्चर शुरू में ऐसा होता है, आपके कुछ ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के कुछ पार्टनर्स हैं, मेंटर्स हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको गाइड करें थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट दी 3 months. नाउ early on what happens is in the few first 3 days you have a bunch of sessions. आपको मार्केटिंग सिखाते हैं, आपको प्रोडक्ट सिखाते हैं, आपको ग्रोथ सिखाते हैं. इट्स बेसिकली लाइक अ मिनी एमबीए इन 3 days, राइट? इमेजिन 3 days में आपको एमबीए करने को मिल रहा है. Now you get to learn a lot of things, but after those 3 days, basically आपका एक सिंपल सा काम रहता है. You tend to meet founders, all the founders every Tuesday. हर ट्यूसडे ओके. को एक टॉक होती है, एक सेशन होता है, जो कोई वाई कॉम्बिनेटर का ही या फिर वाई कॉम्बिनेटर के बाहर का भी आदमी आता है. एंड दिस इज अ बिग लाइक गेस्ट स्पीकर बेसिकली who will come and share their learning. So you will have your Airbnb founders coming in, sharing their experiences. इसको ट्यूसडे डिनर्स बोलते हैं वहां पे. तो रात को ट्यूसडे आता है हाँ, तो ट्यूसडे डिनर्स बेसिकली ऑफिस सात ऑफिस बजे खत्म करने के बाद. हाँ. हाँ, 7 बजे. वो इंडियन फाउंडर्स के साथ दिक्कत होती है क्योंकि वो यहाँ तो शुरू हुआ होता है ऑफिस उस समय. हाँ. बट 7 बजे के बाद यू यू स्टार्ट यू बेसिकली वो बहुत अच्छा समय है नेटवर्क करने के लिए, दूसरों के स्टार्टअप्स को समझने के लिए, उनसे लर्निंग लेने के लिए, दूसरे पार्टनर से बात करने के लिए. एंड देन यू व्हेन यू आर डन विथ योर डिनर, देन यू हैव यू नो अ सेशन, अ टेड टॉक काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि बहुत ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं जो पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं या कम करती हैं. They are going to share some secrets, some inner workings of how it used to be when they were a part of YC or when they were starting up early on. तो ये हर ट्यूसडे होता है.
Then they have, occasionally they have more sessions on Thursdays and Fridays based on, popular requests, etc. But most important is something which is called bi-weekly check-ins. तो हर ओके 2 हफ्ते पे आपका पूरा ग्रुप जो है स्टार्टअप्स का वो साथ आता है एक मीटिंग में, वो पार्टनर्स के साथ। एंड पार्टनर ये पूछते हैं कि आपने पिछले 2 हफ्तों में क्या काम किया, किससे उससे क्या मेट्रिक ग्रोथ हुई, आपकी लर्निंग क्या हुई, एंड अगले 2 हफ्ते की क्या प्लानिंग है आपकी। तो आप क्या उनका प्रोडक्टिव वहाँ वर्क करते रहते हो अपने जब आप जाते हो तो? यस 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 यस। यू ऐसा नहीं कि रेगुलरली थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, यू आर रियली डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट, योर यस यस प्रोडक्ट एंड योर कंपनी इन द 3 months. yes, Nice. it is actually very exhausting, to be frank, because you have to learn, you have to understand Implement. how the business and implement right now, right? बट So कैसे speed कस्टमर is टेस्ट करने, कस्टमर इंडिया में बैठे हैं कैसे? तो right. तो I think this was hard for us. तो हम क्या करते थे कि हम शाम को जाते थे वाई कॉम्बिनेटर, वापस आते थे रात में 10-11 बजे, रात भर काम करते थे और फिर सुबह सोते थे। एंड दिस इज हाउ इट यूज टू वर्क फॉर अस। बट कुछ लोग और भी अरेंजमेंट रखते हैं कि अगर आपके पास 3 को फाउंडर्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक महीने 2 फाउंडर रहेंगे, एक इंडिया रहेगा, फिर वो स्वैप कर लेंगे ताकि पूरे प्रोग्राम का थोड़ा थोड़ा पार्ट सब लोग बेनिफिट उठा सकें। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि उन 3 महीनों में वाई कॉम्बिनेटर actually when you are funded, you have a bigger responsibility now, which is you have to grow really fast, क्योंकि डेमो डे जो आ रहा है at the end of 3 months, that is when you are going to raise your seed round. All the big investors across the world attend that event, literally every big investor that you can name. It is online as well, offline as well. Hundreds of investors look at your pitch, look at you, who you are, and then they decide to have further meeting and invest in you. Yes, you were मतलब saying तीन something. महीने अच्छे से मेहनत करिए तो आप लकी हो सकते हो डी डे में। और व्हाट डज बीइंग lucky means over here? How much funds can you raise? Are they really big and are you they can really bless you with a lot of funding? Yes, everything can happen. So people can raise as big as 20 million, $40 million as Oh, well wow. in recent past I've seen. But yes, it is an amazing place to raise funds because all the investors are there and there is a competitive dynamics that starts to play. अगर आप किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, दूसरा इन्वेस्टर देख रहा है कि okay, they already have this interest. So if I Hmm. don't come in this round, I will be left. So this is the first time in an entrepreneur's journey where the investors are chasing you and you're not chasing investors, Okay, okay. right? Nice. And they are VC firms or they're angels? There are all kinds of folks. All kinds of There are folks. VCs, there are angels, all kinds of investors that you can imagine, Nice. right? And ये 3 महीने बेसिकली आपको वो ग्रोथ दिखानी है जिस ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैं बोल रहा था कि स्टार्टअप्स शुड ग्रो फास्ट, दैट ग्रोथ इज एक्सट्रीमली है बहुत इंस्ट्रूमेंटल। हार्ड, मतलब द वे इट इज साउंडिंग फॉर अ इंडियन पर्सन कि आपको 3 महीने में ग्रोथ दिखानी है, आप खुद वहां पे फंसे हुए हो, मतलब इन द वे आप वहां पे स्टक हो। यस यस अब यस काम तो यस यहाँ, यस ग्रोथ तो काम यहाँ ऑफिस में करने से होगी ना, मार्केट में कस्टमर के पास जाओ, वो करो, वेंडर के पास जाओ, कुछ ना कुछ करो। इट इज सो डिफिकल्ट लिटरली। अगर कोई सिंगल राइट। फाउंडर है तो वो क्या ही करेगा लिटरली। नहीं, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वंस यू गेट funded by YC, you figure out these operations beforehand. Who are the people who are going to run the show when you are not here? कैसे ऑनलाइन मैनेज करेंगे आप अपनी कंपनी को? एंड इट्स नॉट जस्ट मैनेज, you have to grow, ग्रो right? You have to क्या learn वो there and स्टेटमेंट्स देखेंगे implement here. कि पहले इतने कस्टमर थे, इतना पैसा बैंक में आ रहा था, अब इतना आने लग गया 3 महीने में, ये सब करके? Yes, exactly. That is the graph that people show. गुडनेस। They have revenue on y-axis, time on x-axis. This is how it is growing. That's why I'm the startup that you should fund. वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी रियल। लोगों की Yes, जेब से पैसा निकालना है और यूएस में रह के, और अगर कस्टमर इंडियन है, आई रियली अंडरस्टैंड कि हाउ बिग थिंग इट इज दैट यू हैव डन। yes, बट right. नाइस। सो दैट इज like one of the world's best incubator we just discussed about. True. और बाकी इंक्यूबेटर्स इंडिया के सर्टेनली इस लेवल के तो नहीं होते, ना इस लेवल का फंड होता है, ना इस लेवल की एग्जॉस्टिव
चीजें होती हैं. right, Okay, what is the ratio of Indians over there and what is the demography like? पूरे वर्ल्ड से आते हैं, यूएस के ज्यादा होते हैं कि हम इंडियंस से right. ज्यादा, वहाँ पे क्या है? So it's a very inclusive place, though of course proximity की वजह से and market understanding की वजह से Americans and US citizens का सबसे ज्यादा share होता है. It's almost like 50% back in my batch. I'm not sure about today, but Indians happen to be a large part of the overall fund size. YC is very bullish on India. They are very excited, always excited about Indian startups because you have great examples, right? Razorpay, Meesho, Grow, OK Credit, Khata Book. All these are YC companies, right? So they see a tremendous potential in India and they're always looking forward to invest there. And English remains the language they use over there. Yes. And is it difficult to have a company in US, a profitable company you are running here, and is it difficult to have your parent company in US, the taxation, salaries you draw, whatever accounting? Because it sounds, someone who has not done it sounds something big. Even I bought some shares of Amazon and Google, and I have sometimes difficulty in managing all this. I think यार बेचो उनको, खत्म करो, इंडिया में बस रखो. बट वो ग्रोथ इतनी दे रहे हैं, मेटा के शेयर्स भी हैं, तो वो इतनी ग्रोथ दे देते हैं कि मैंने कहा यार they are worth having. And I can imagine running a company based in US. So is it manage हो जाता है कि है थोड़ा Sushank, are you there? yes, yes, Yeah, can you hear? हाँ. आ गया. So I think शुरू में थोड़ा hard है. When you are setting up things, it's hard, right? You have to, have a company there, then open a company in India, then sell this company to US company. But once the processes are set, then it's not a problem, to be frank, right? It's pretty much a routine work, so you get used to it. It's just like setting up things early on could be tedious for Indian founders. एंड आफ्टर यू हैव ग्रेजुएटेड, नाउ दैट यू आर वर्किंग हेयर, इसके बाद वो लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ है, क्या उनको रिपोर्टिंग क्या देनी पड़ती है? कोई ऑब्लिगेशन बन जाते हैं क्या आगे के? और इसके बाद कैसे टर्म्स होते हैं? आफ्टर यू हैव 3 months यू हैव पास, यू हैव टेकन $150,000 एंड अगेन 7% इक्विटी दे हैव, तो क्या Correct. रिपोर्टिंग होती है जनरली? Got it. So just like any other investor, you can submit like a monthly report. How is the business doing? It's advisable that you should keep doing, which is you should keep sending your reports to YC. But YC का ऐसा कुछ hard and fast नहीं है, to be frank. They are okay. $150,000 you took, you gave 7% of equity. To be frank, if you decide I don't want to be a part of the program, it's okay with YC. You don't want to be a part of demo day, it's okay with YC. You want to defer the demo day to the next batch, that is also okay with YC. You don't want to come to US, that is also okay with YC. I mean, how will So they even, they have invested $150,000, 7%. So how will they even, monitor, or if a person decides not to go to US, is there online program also or something? yeah, so you said that basically I run, for example, as you're saying, right, solo entrepreneur just Yes, starting out, not absolutely. possible for you Not to go to possible. US, Yes. Yes. right? So you can say that I will stay online, I will join you guys online as much as possible, and which is okay. So YC is very flexible that ways. They invest in people, they say, and we can see that in this description as well, which they truly care about people. They are going to build the best company. So they give Yes. $150,000, take 7%, and Something then keep it very different, flexible. cultural difference, big time cultural difference. यहाँ पे Yeah, तो कोई yeah. पैसे दे दे तो इतना जनरस नहीं होगा जनरली. अरे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. तो when you start your YC journey, one of the in the first day, what do they say? वो ये कहते हैं कि I know a lot of people might be thinking that they have faked their application and they have हाँ, gotten somehow here, हाँ. and they say कि it is perfectly okay. If you are feeling this imposter syndrome कि अरे यार मैंने तो बस कुछ कुछ फंडे लिख दिए थे and हो गया है मेरा किसी तरीके से हम्म, YC में, हम्म, am I there yet? So they say don't worry at all, right? हम्म, This is the start point. Even if you think that whatever has happened till now, you're not sure about it, you're not sure about idea, you want to scratch everything, start from scratch, हम्म. chalega.
So 50% of the companies, by the way, 30 to 50% of the companies pivot completely during the same program. 30 to 50%. Yes, they change the whole idea of everything in that same program. So that kind of flexibility and openness gives the entrepreneur the confidence that I can share whatever I'm going through with the partners and really build my thing. If they are in constant fear, ki if it is going to work out, how should I portray myself to them? They are not going to be honest. And if they're not going to be honest, they're not going to share the right problems that they're facing on a day-to-day basis. And you can't believe YC solves all sorts of problems. It's not just business problems. If you don't have money, at times YC has helped in that 150K, they've transferred some amount to their personal account of the founder to make sure that they are able to make their ends meet. They also give emotional counseling and startup help as well. If you're feeling depressed, there are people who will help you because it's a lonely journey. It's hard. So they are very accommodating in that sense, and that's why they are YC, as we know. Sounds like a real support. Sounds like a real Yes, support. yes, yes. And talking about post YC, I think you are always a part of that network. So there is an internal social network called bookface.com, which is Mhm. opposite of Facebook, Bookface. Okay. So bookface.com pe you Is it can by basically, Facebook? no, it's not like Facebook. It's just Is it like by a, Facebook? Is it by no, no, Facebook? no, no, no. Okay. They have नाम made ही their रख own, दिया है ना. they have made their own internal software where Okay. all the startup founders can connect, can share deals, can sell products to each other, ask problems, learn from each other, and that is available to you throughout your life. It is there Nice. for you. And of course, you can book office hours. So basically, you can book time of your YC partner even after the funding, even after the program. And these During the partners program, work there full time or they are also visiting? no, no, there are two kinds of partners. One are full time, one are visiting. Visiting partners, of course, as you can imagine, have something else to do as well. But in a short period of time, they are advising YC companies. Yes. ग्रेट. तो चलो ये तो आपने एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस बता दिया, आउट ऑफ इंडिया एक्चुअली. अब Right, थोड़ा इंडियन एक्सपीरियंस इतना प्लेजेंट शायद ना रहे, बिकॉज आई नो right, विथ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो. right. बट ठीक है, द जर्नी इज लोनली, दिस इज द अंडरलाइन पार्ट. द True, जर्नी agree. इज Right, 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 nice. Now we have discussed about what qualifies as startup. We have discussed about incubations. We have discussed about world's best incubator. right, We have discussed about uh, venture capital ecosystem at large. right, One practical information for our audience कि जब पैसा ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया में कल्चरली पैसा लेने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एक सेंस में कि भैया पैसा, तो क्या बिहेवियर होता है इन्वेस्टर्स का जनरली? इज इट, are they very conscious about how much money they have given and they're poking their nose every time? What kind of reporting is required? क्या हर महीने reporting देनी? Because I run a bootstrap business and I take my decisions and I love this freedom. As in कितना ऐड चलाना है मेरे को, ये मेरे पे डिपेंड करता है. और मेरा को लगता है कि यार अब मेरे को इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा ऐड चलाना है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ऐड चला देता हूँ. कई बार मेरे को कई बार रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है. क्या अगर किसी ने पैसा लिया हो तो इस तरीके के और यही रिस्क हेल्प करते हैं ग्रो करने में, लर्न करने में? कितनी फ्लेक्सिबिलिटी true. रहती है एक फंड लेने के बाद, चाहे जहां से भी लिया हो? अगेन वाईसी जैसा जनरस तो नहीं देखा होगा, बट इंडियन इकोसिस्टम में जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं स्पेशली, Right, right. या जो इंडिया बेस्ड वीसीज हैं, तो Hmm. ये कैसा मतलब एक्सपीरियंस होता है आफ्टर रेजिंग फंड्स Got विद it. इन्वेस्टर्स? यस. Sure. So as you can imagine, if the investor is experienced, right? If they have invested in startups before, then they know that giving freedom to founders is the best thing that they can do. Their job is to advise them from their learnings that they have seen, but at the same time, they need to keep an open mind and give the founder the freedom of execution, right? So इसीलिए कहते हैं कि that's why it's important to raise funds from experienced investors because they understand these nuances, they understand these nitty-gritty details. So they will advise you. At times, the advice will be slightly more aggressive, but they will never take or they will not, get into day-to-day execution. Ideally, you will be meeting them once a month, giving them a report of how things are working and how you're planning to grow.
and all the discussions tend to happen in that time frame, and then you move forward and see what happens. Your responsibility as a person who has, raised funds, you have to understand that that person is also the owner of the company. As you are the owner, you are holding certain equity, they are also holding equity, and they have invested in terms of money while you are investing in terms of blood and sweat. So even they command certain kind of respect, certain kind of, information that you should keep sharing with them. So, not take, if you're taking a big decision, if you are changing the direction of the company, it is generally advisable to, run it through your investors, because that's, they are also bound to have that kind of understanding. The ecosystem is mature enough that if you don't do these things, basically people will have a sour taste, but they won't do anything wrong with you. They understand, right? They will help you learn few things. मतलब इतना uh, ब्रूड नहीं है मतलब लेना मतलब. ha. It is basically about experience. If you have raised from a person or a firm who has invested a lot, they understand this thing really well. But if you are raising from somebody who hasn't done this before, then you may or may not have a good experience. Nice. Great. Right. My last question for funding, and then we move to our next topic. एंड माय Sure. लास्ट क्वेश्चन इज, ये जो वीसी आपने बताया, ये सब क्या यूएस के ही होते हैं, और जो इनकी फंड्स की बैकिंग होती है सब यूएस की ही होती है, कि इंडिया बेस्ड वीसीज भी होते हैं? Of course, India-based VCs भी हैं, and there are a lot of VCs who are now coming up and setting up their shops right in India. तो ऐसा हम्म. जरूरी नहीं है कि केवल यूएस के VCs हैं. इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे माइक्रो VCs एंड VCs आ रहे हैं, जो इंडिया, मतलब होम ग्रोन VCs हैं. ग्रेट. और अगर किसी को रीच आउट करना है, तब बेस्ट वे यू टोल्ड इज कि आपने सेगमेंट की फंडेड कंपनी को ही उठाए, उनके इन्वेस्टर्स चेक करें, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, Sure. टू फाइंड Yes. द इन्वेस्टर. Right. तो चलो, दैट वाज अ ग्रेट डिस्कशन. Yes. नाउ मूविंग ओवर टू एबल जॉब्स. Sure. Please tell us what is your wonderful Y Combinator graduated company matlab does, and please tell us what is your target market, and what do you do over there? Sure. Yes. So, Able Jobs is an upskilling platform for young graduates to help them get jobs early in their career. We started with a vision of eradicating unemployment in the country. We are still holding true to that vision. Over a period of 4.5 years, we have placed more than 40,000 people across India in big companies and small companies alike. You can imagine us as an edtech platform. Basically, students come, they take a lot of free courses on their app. We have an Android app. They can also apply on jobs that are listed on that portal. It is completely free of cost. Wow, After free of that, cost, absolutely. They can do the course and they can apply it to the companies. yes. Now, uh, yeah, sorry, go ahead. कोर्स करने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलता है जिससे वो कंपनी में अप्लाई करना के लिए एलिजिबल आप होते हो, ऐसा कुछ होता है क्या? No, it is, these courses are meant to help you prepare for the interview, and the jobs are there irrespective. If you want to apply for the jobs, you can do that. So it's basically a free ecosystem, a community of fellow learners who can learn and apply for jobs. Now, few students want more help, right? They require deeper training, more skilling. For that, we have flagship programs which are paid. So we have a program in data analyst, in a data analyst track program, and then we have in operations management. There, people can come and take our paid courses. These are live classes, so you don't just get a course on the app. You also have live classes for 2 months, and after graduating from that program online, you start applying to our curated set of companies and get jobs. ओके, प्लीज टेल अस मोर अबाउट द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, बिकॉज पीपल मे बी इंटरेस्टेड इन इट, कि वो कौन कौन से Sure. जनरली टॉपिक्स में होते हैं, अगर वो बहुत सारे नहीं होते, Right. इफ यू कैन, और Right. उनके क्या Right. चार्जेस होते हैं, और वो क्या ड्यूरेशन, Sure. सब 2 महीने के ही होते हैं? Right. So these are 2 month long programs. We have purposefully kept it small so that people can get their dream jobs faster. There are two flagship programs that we run. One is data analyst and second is operations management. Anybody who's looking to get into the field of data, to learn all about data science, learn skills like Python, Excel, Tableau, and become a data analyst in big companies, then they can take this course. They can learn from industry experts live.
practice real case studies with them online. And then after successful graduation from the program, they can actually go ahead and apply with the companies that we bring for them. And it's like a digital campus. There are companies who come and hire students just like in any other college. Companies come to us and they hire our students as well. Similarly, we have operations management. This is slightly Okay. broad. People can take that course as well. ओके उसका टेस्ट होता है कोर्स के एंड में क्या? उसके बाद ही लोग Yes. एलिजिबल होते हैं बैठने के लिए प्लेसमेंट में, Yes. समथिंग लाइक दैट? Yes. Just like a normal college, you have a And final there are 2 semester months, exam. this is a 2 months online course. Yes. For 2 months. techie, sorry, Sorry? I'm cutting you again and again. For techies, No it worries. is data science related, and for Yes. non-techies, it is that. Operations. Yes. Yes. Okay, great. There are no prerequisites. You don't need to know anything prior to the program. You just need a great intent that you're going to come and work hard with us online, complete all the assignments, clear all the assessments, and best jobs are waiting for you. All right, because this is a very great thing. Anybody after class 12th can do this? We need graduation at least because companies are ready to hire. So if you are in college right now, then you will have to wait out till you graduate before you can apply for our companies. The offer will remain valid. Recently, a student completed a program in third year, then they completed the fourth year, came back to us, and we got them placed. Okay. Would you like to tell the charges of these courses? Yeah, sure. So the analyst program is of 50,000 rupees. How it is broken is you just have to pay 25,000 rupees to get started. After you and only when you get placed, you have to pay the rest 25,000 rupees. So in a way, we invest 25,000 rupees in every student. It's our skin in the game to help make sure that you get placed. And for operations management, it is 30,000 rupees. You just have to pay 15,000 rupees upfront and 15,000 rupees after you get a job. Taxes are inclusive or exclusive? Inclusive. Okay. Because this is a huge amount. I mean, for normal Indians, Sure. okay, somebody who has done, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे-छोटे MBA के colleges हैं, वो सस्ते में like 1.5 लाख में MBA करा देते हैं, ऐसे भी colleges हैं, और सस्ते में भी, और सस्ते का तो नहीं पता, लेकिन 1.5-2 लाख में एटली, तो 50,000 रुपए अगर उसमें डाल रहा है कोई, तो आई एम श्योर कि 25,000 भी डाल रहा है अगर. एंड प्लीज टेल अस अबाउट कि क्या इनका रहता है प्लेसमेंट का रेशियो. जैसे 100 लोगों ने करा तो क्या 100 के 100 की अच्छी जॉब लग जाती है, और एवरेज सैलरीज इफ यू. Sure, why not? Yeah, so almost in 3 months after graduating, 85 to 95% people get placed. Rest other people basically choose to as I said, defer the placement. They either are looking to go for MBA or higher education. In that cases, they're not opting for placements, but anybody who opts for placements do get placements. So that is one thing. Average salaries obviously in analyst is around 5 lakhs 6 lakh rupees per annum, and for operations folks this will be 3 lakh rupees to 4 lakh rupees per annum. Wow, this is very good for Indian standards. Yes. Just by doing a 30,000 rupees course, does a person becomes eligible to get 30,000 rupees, 25,000 rupees per month? Yes, This is that's really true. good. And 85-90% is the placement rate. So Yes, it sounds really workable for people who have just done their graduation and who, right, who maybe are thinking of MBA, because tier 2 city, tier 2, 3D के colleges, MBA colleges भी इतना ही package offer करते हैं. So just why not to give 2 months course, right? yes. Nice. Great. So this is the paid model. और अदरवाइज जो नहीं, फ्री कोर्सेज भी हैं और लोग फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, राइट? और फिर उसके बाद लोग सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हैं. They don't have an instructor there. There's no live intervention. You can basically go through the videos and slides that are on the app. You can also practice quizzes. There are all the material available. So if you are competent enough to do it by yourself, then it is available for free for you. और लोग फ्री में अपनी जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं आपके यहाँ के. Yes. ओके. और रिक्रूटर्स की कुछ प्रोफाइल बताइए. सब टॉप नॉच कंपनीज हैं कि छोटी कंपनीज भी हैं, जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, क्या ये लोग भी अपना अकाउंट खोल के
आपके यहाँ अपनी वैकेंसीज दे सकते हैं? बिल्कुल. So we have all sorts of companies. All what we make sure is that the company is genuine, that they are not going to dupe our students after getting placed. So that is the reference check that we do before onboarding any company. Okay. But companies of all sorts, of all sizes, big companies. So we have companies from Accenture, Amazon, JP Morgan. All those companies are also there. You have Hmm. Indian startups like Meesho, Big Basket, Redbus also there, and even there are even smaller agencies and startups who are hiring from us. Hmm. Nice. And Nice. it is Great. completely free for companies to hire. So there is Okay. no charge of hiring. You Okay. can hire students for free. Okay. And minimum salaries they have to offer is approx 3 lakh rupees. Is there where Yeah. you ask people to? So we let this decision be open between student and the company. There Hmm. are sometimes students who want job near their location, so they are okay with a lesser salary. So we don't want to interfere there. Hmm. It's basically we list all those jobs and people choose the one they want to get into. Okay, great. So it's a freemium model Yes. and two flagship courses which have Yep. very good hit rate. I mean, Yes. if a person invest only 25,000 और Yes. बाकी का जो 25,000 है वो अपने फर्स्ट मंथ की सैलरी या वो 2-3 महीने की सैलरी से अपना दे सकता है जैसा अभी आप लोग का बिल्कुल. लो. Yeah. Right. So Right. upfront investment is only 15,000 and 25,000, no other taxes. Yes. And chances are कि the person can land up in a very good job at least. Yes. इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतने कम ड्यूरेशन के साथ तो दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर इंडिया. दिस इज व्हाट इंडिया Yes. नीड्स. Right. Definitely. Great, that's a We great have startup. we have placed more than 40,000 people across India, which is if you sum all the placements from different edtech companies, even then this will not come close to 40,000. Yes, now it is very clear what is a startup and what is the scale and how fast it can Yes. grow and what Right. impact it is creating. Certainly very Sure. important, very relevant for India. Yep. Great. And I'm sure you will be adding more courses in times to come and you'll be Yes. specializing in them as you Right. grow. What are the Right. future plans really? ये तो मैंने अपने से ही सोच के बोल दिया. So there are some interesting things happening. We are launching a mini MBA program, which Okay. is which is a 6-month program where we teach a little bit of everything and let people choose one area of expertise. So one mini MBA program is in the works right now. We are working on that as well. We have financial analyst course, HR, and the sales and marketing courses also in the pipeline. So yeah, a lot of things coming up next. Nice, nice. Great. My best wishes. And I Thank would also you. be, and analyzing your things and see whatever I can benefit it for my company. Sure, why not? Definitely. Okay. So now, so we discussed a lot of things. Now coming to the Yep. last chapter that I thought we would be Sure. discussing. Uh, Right. so I have been, following your LinkedIn, and it is such a very good content you're posting on product management and all. So I just Yeah. thought that this is an upcoming field, or I'm not sure if it has really matured. Hmm. Um, a lot of people want to make their career in product management. This is something which did not existed before. Right. Yeah. Conventional MBAs, I don't think they are covering. Yes. So first of all, why it is so exciting? Why do I see so many discussions about product management and so many people are interested? Why is this so exciting? Does it offer a very good money, or is the role very interesting? Work profile very interesting? Why it is so interesting? First question is this. Sure. So yes, you pointed it right. I think the one big reason is that you get good salaries. So product management professionals on an average make 12 lakh rupees an annum, and this is average salary. So obviously there's a lot of money on the table. Exciting beyond salary, it is exciting because it's a multifaceted role. So you don't need expertise in a particular field. For example, you don't need to know how to code, or you don't need to know how to design in that depth. But what you should know is how to make a product successful, right? And that means collaborating with a designer, an engineer, a data person, all of these people, a marketer.
all of these people and making sure that the product is successful, right? So I think a lot of people who have this sort of bend where they want to do all things, like they get bored easily by doing just one thing, Hmm. it's a very good job for them, very good role, because they tend to, solve that itch of theirs, where they can, work with an engineer sometime, Hmm. they work with a designer sometime, and eventually make sure that the product is successful. Hmm. And what kind of companies have this designation? What kind of companies hire product managers? Do all Yeah, companies hire product managers? not necessarily. Product management is generally a field that you would, generally a job that you would see in upcoming tech startups, where different teams work together, right? And they need some function to tie all these functions together and make sure that the product is successful. So not all companies, conventional companies might not be hiring product managers, but interesting thing is that even though they don't call it out that they have a product management title inside the company, they would definitely have people who will be doing product management. Although their name will be project manager, they could be program manager name, they could be, strategy consultant, but maybe their role in their roles and responsibilities, product management will be embedded. ओके आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप किसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई नॉन कंपनी का नाम लेके बताएं कि इसका प्रोडक्ट मैनेजर ये करता होगा, या इसमें ये, इस कंपनी में ये पार्ट होगा, ये प्रोडक्ट मैनेजर कर रहा होगा. श्योर एंड बिफोर आई गिव दैट एग्जांपल, मैं ये बताना भी चाहूंगा कि डिफरेंट कंपनीज में प्रोडक्ट मैनेजर्स डिफरेंट काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इट्स इंटरेस्टिंग एंड एम्बिगुअस है. ट्रिकी. हाँ, थोड़ा एम्बिगुअस तो है ये रोल, क्योंकि हर कंपनी में लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं. So for example, if I talk about, let's say, Flipkart, let's say, right? And if you are a product management manager in, let's say, big electronics vertical. Now, big electronics is basically TV, fridge, washing machine. ये category जो है, इसके आप product manager. So your responsibility for product as a product manager will be to grow the revenue of this category, right? Now you will be working with multiple people. आप देखेंगे, आप funnels analyze करेंगे, how many people come to the homepage, how many people eventually check out the products, how many people add them into the cart, what are the problems they are facing in these steps, and how you can solve them, right? So that will be your responsibility, that let's make sure that this funnel is smooth, that anybody who is showing even a slightest interest in, a particular fridge, TV, or any item, they are able to make a purchase decision with extreme clarity, right? So in that process, they might have to develop few features. So they will have to talk with developers. They will have to add few pages of website, so they might want to work with a designer. They might have to look at some data, so they'll have to go to data analyst and understand and analyze data. They might also have to work with, do we have enough supply in the inventory? So they will have to work with the category manager, who can ensure that we have all the latest products listed मतलब on the. सारा काम है, ये तो सारा काम हाँ, इसी पे डिपेंड कर रहा है तो सब कुछ. right. So calm, it's a very interesting role because it's horizontal in that sense, that you have to work with a lot of folks, but ensure the success एंड द of वे the इट इज initiative. साउंडिंग, ये तो बहुत सीनियर लेवल का रोल लग रहा है कि वंस यू नो अबाउट ईच एंड एवरी ऑपरेशन ओनली देन यू बिकम एलिजिबल. सो व्हाट इज द एवरेज एज एट विच पीपल बिकम प्रोडक्ट मैनेजर्स? डू दे बिकम राइट आफ्टर देयर एमबीए और इट टेक्स Uh, टाइम? yeah, so early on, product management used to be a function where experienced folks only got into. But in today's world, even people right after BTech are becoming product managers. वाओ. They're not just MBA, even after BTech. In fact, I am the case. Right after HBTI, I did my startup, and the first job that I did was product management. So Yes, because that was your company. But anybody is, will anybody no, get placed? Acha, acha. in different companies. So Okay, okay. Nice. after my first company, I shut down my first company. I went on to do a job, and that Hmm. was a product management job. So Hmm. so yes, opportunities are there. It's because that knowledge is democratic, right? You don't need, so as to say, experience to only get to know these things, right? So so yeah, it is open for young people as well.
Also, it is sometimes really useful to have young people in these roles because they have energy, they have a lot of enthusiasm, and they don't have biases. What happens with experience is that you get a lot of biases, right? So if you're Hmm. biased, that you will then you'll take only certain kind of decisions. You won't take risk, while these Hmm. younger folks end up Nice. taking a lot of risk and making the product Great. successful. So, what qualifications are necessary, and are there these jobs really available out there? Matlab, do companies hire in the name of this product title, this job title? We need product Yes. managers. Yes. So companies do hire product managers in the same title. They also go for campus placement drives and hire students from there. Although this happens only in top tier colleges, top tier college like IITs and IIMs, but then it is, it is okay to, may reach out to them through different job portals and showcase that you can do the job. Any product management course a person can do to become eligible for this, or Yeah. So yeah, oh, that is what the interesting part is, which is you don't have there's no criteria of being a product manager. If you hmm, ask me a question that what can I do in order to become a product manager, hmm, fortunately and unfortunately, both, you don't have a fixed path to get into product management. It hmm, is basically your enthusiasm about products, right? How do you analyze? Do you have different case studies that you have published online about hmm, different products? How, for example, you can take up your own problem. I want to grow revenue of Big Basket by 10 times. That could be a case study that you can hmm, publish and showcase that you have product management skills, right? hmm, So there's no fixed path, and it is open for a lot of folks, and that hmm. is why it becomes interesting as well as a daunting task to get into product These management companies as well. have their criteria where they judge you on their parameters to find out if you are the right fit or not. So Yes, yes, you can only apply if you think you are right, and you will be judged as per yeah, the roles requirement. Great. Now coming to my super last question. Um, Super last question. Our first check पे भी venture partner हो, right? right. What kind of, because a lot of audience who has heard you इतना time देके जिसने सुना है, they are really enriched with so much of information about startups Right. and your Y Combinator and able jobs and product management. Um, so what kind of uh, ventures you fund, and what kind of people can write to you, and what do you look when you invest in a company? Sure. So, first check, as the name suggests, is we try to be the first check in a startup's journey, right? So, first check is as a micro VC fund, which tries to invest very early on, almost on the napkin stage when it comes to startups. Ideally, people can, reach out and apply whenever they feel right? If it is just an idea, happy to brainstorm. If it is a working prototype, happy to brainstorm. We'd like to come in as early as possible and invest a small amount to help people grow and get to a seed round of sorts. What is it that you look for? I mean, you must have invested in a couple of companies, so what kind of person should not apply to you? Very interesting. So I think somebody who is not sure whether they want to do a startup. I think Hmm. a lot of people come and just test waters कि अगर फंडिंग मिल जाएगी तो स्टार्टअप कर ले, right? हाँ, That is wrong. If okay. you will have to be extremely Hmm. sure Hmm. that you want to start something, and that should be evident in the effort you have put in your venture, right? It is okay if you are not left your job, but do Hmm. you have a working prototype? Do you have a market survey? Do you have Hmm. some early POC, some paid pilot in case of enterprise startups, some or the other thing that shows your intent. And And is private limited necessary before they apply to you? not really. With the investment, we can the process of registering a company and investment can run parallelly. Parallelly, okay, great. And what is the amount that you generally invest? uh, First check invests around 75 lakh rupees. Okay, that is the amount. Nice. Great. Okay, Siddharth, thank you so much. It was such a wonderful talk. Even I learned so many things for myself. I still have so many questions, but I'm seeing that I have just dragged it for more than I think
We'll be 2 hours in couple of more minutes. Yes. Um, okay, my last question to you. I mean, super last. What is the last cookware product you bought online? This is for my selfish question. And yes. Unfortunately, I don't buy cookware. Oh, wow. My wife would have done that, or my father and mother would have done that. Okay. Unfortunately, I don't spend a lot of time at home, so these decisions I don't try to take part Any in it. kitchenware product you bought online in last month? I don't think so. Okay, we get maximum orders from Bangalore. Maybe Oh, is it? yes, yes. Mumbai I and Bangalore. From past 15 days, I'm seeing every next order is from Bangalore. So we have this Wow, Amazon team. They are telling us to put our products in Amazon warehouse in Bangalore, and we are nice, considering that now. interesting. All the best. Yes. But you get to your wife and ask her, and please get back to I'll me. do I want that. this answer. Sure, sure, Okay. sure. Okay, Siddharth. So nice to speak to you. So nice to Same speak. here. Thank you so much for such an in-depth session. Loved it. Yes, yes. Let's see if we can come up again with another in-depth session. And Sure, sure, yes, we'll really love it. Okay. Okay. sure. Bye, Siddharth. Thank Bye. you. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.